Now class, we will study about the overhead variances. Now what we mean by an overheads? Overheads is nothing but it is a total of your all the indirect cost. When you add all your indirect cost. So हमें क्या मिलता है? Obviously overheads मिलता है. इनडायरेक्ट मटेरियल भी हो सकता है, इनडायरेक्ट वेजेस भी हो सकता है, एडमिन एक्सपेंसेस है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस आर देयर. सो अभी तक हमने क्या देखा? वी हैव जस्ट सीन दैट द हाउ द वेरिएंस आर computed in the respect of the material and the wages. Now similarly this variances are also computed in the respect of the overheads. So when I say about the overheads variance, the overhead variance is nothing but it is a variation in the absorption on the, or the you can say the over recovery of the overheads. Okay, it can be an over recovery, it can be an under recovery. ठीक है, तो ओवर रिकवरी को हम क्या कह सकते हैं? ओवर एब्जॉर्प्शन भी कह सकते हैं. अंडर रिकवरी को क्या कह सकते हैं? वी कैन से द अंडर एब्जॉर्प्शन एज वेल. So here we are going to calculate the variances in the absorption, or you can say the variances in the respect of recovery of an overheads. See, overheads जो भी absorbed होते हैं ना, they are absorbed on the basis of the standard overhead rate, that is known as SR. जो भी हम standard overhead rate को बोल, in the short we use word SR. तो अगर वो रेट मुझे कैलकुलेट करना है तो हाँ, आई कैन कैलकुलेट दैट रेट. तो यू कैन राइट इट डाउन लाइक बजटेड ओवरहेड्स डिवाइड बाय बजटेड आवर्स. व्हेन यू डू बजटेड ओवरहेड्स डिवाइडेड बाय बजटेड आवर्स, or you can do the budgeted overheads divided by budgeted output in units, depending upon the question. So you can find it out the standard rate. Again I am repeating, budgeted overheads divided by budgeted hours, or you can, if you wanted to find out per unit, you can even go find the budgeted overheads divided by budgeted output in units. So हमेशा अगर आपको कोई पूछे कि स्टैंडर्ड रेट क्या है, तो स्टैंडर्ड में रेट को हम कैसे रेफर कर सकते हैं? या तो हम टोटल ओवरहेड्स भी कह सकते हैं इसको, एंड इधर इवन वी कैन यूज द फिक्स ओवरहेड्स और द वी कैन से इट एज अ वेरिएबल ओवरहेड्स. क्योंकि when I say about the overhead variance is divided into two parts, fixed overheads as well as the variable overheads. समझ में आ रहा है? So in the next class what we will learn? In the next class we will learn about the this types of the this overhead variances, that is variable overheads variance as well as the fixed overhead variance. ठीक है, and even we have a subdivisions among it. अब यहाँ पर हमें जब per hour find out करना है, if they are asking us to find out if the standard overheads rate is on the hourly basis, ठीक है, तो फिर we need to do the much more calculations. We have to apply the formulas and we need to find it out the standard hours. We need to find it out the standard overheads, recovered overheads, budgeted overheads, actual overheads को find out करना पड़ेगा. Per unit में दिया होगा तो per unit also में we need to find it out. Okay, so in the next class what we will study about these types as well as we will see some formulas of the standard rate per hour and the standard rate per unit.